नमस्कार. आवाज महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. मी गीता दराडे. आज जागतिक पर्यावरण दिवस निमित्त बिल्ड ग्राफिक पेपर लिमिटेड कंपनीमध्ये कार्यक्रम असतो. लहान मुलांचे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनमधील प्राइज डिस्ट्रीब्युशन होते. या कार्यक्रमासमोर बोलताना माननीय HR भट साहेब व एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंटने भरपूर मोलाच्या गोष्टी सांगितल्या, जेणेकरून पुढच्या पिढीला मोटिवेशन वन मिळेल. मंथ और 1 year efforts of every individual. आपको एक पेड़ लगाएगा, उसको फल मिलने के लिए मिनिमम 10 साल लगता है. कुछ पेड़ तो नेक्स्ट जनरेशन में उसका फल देता है. बट I think you now understand what I am going to tell you the next sentence. I think so. But वो ट्री काटने के लिए इट टेक्स हार्डली 1 minute. आजकल तो ऐसा मतलब बैटरी ऑपरेटेड एग्स आ गया, तो 1 मिनट भी नहीं लगता. आधा मिनट में ट्री विल कम ऑन द सॉइल. So that is the reason I tell each and every individual, हर एक आदमी को अपना जीवन में, अपना जीवन शैली में, अपना आदतों में, अपना इंटरेस्ट में, अपना एंजॉयमेंट में ये माइंड में जरूर रखना है, मैंने एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहा हूँ. जब मैं एनवायरनमेंट से कुछ लेता हूँ तो मैंने उसके लिए क्या कर रहा हूं. हर एक एक्टिविटी एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ लेते हैं. हम अपना घर में खर्च करने का, इसमें इतना सब्जी लेके आया, इतना रुपीस खर्च हो गया, इतना दाल लेके आया, इतना खर्च हो गया, इतना फ्रूट्स लेके आया, इतना खर्च हो गया, मेरा बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना खर्च हो गया. कोई ये नहीं सोचता है मैंने इतना पानी लिया, पानी का पैसा इतना खर्चा हुआ, मैंने इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, उसका इतना खर्चा हो गया, मैंने इतना पेड़ काटा, इसके लिए इतना लोगों का मेहनत था, उतना मेहनत बेकार हो गया, मैंने इतना अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन यूज किया, इतना वेस्ट हो गया, मैंने इतना इनडिसिप्लिन था, हर बार मैं जाता हूं तो हाथ में कुछ नहीं लेके जाता हूं, आने के टाइम में प्लास्टिक बैग में सामान लेके आता हूं. आप सोचिए हमारा हर एक दिन का आदतों से हम कितना सेविंग कर सकते हैं. ये सेविंग अपना आपका, अपना जेब का, अपना कैश फ्लो का सेविंग एक ही नहीं है, ये एनवायरनमेंट का सेविंग है. हर एक एक्टिविटी आप कंट्रोल करेगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप कम यूज करो, लेकिन जितना चाहिए उतना यूज करो. एनवायरनमेंट का जो चीज है उसको यूज भी करना है. ये नहीं मतलब एनवायरनमेंट में जो है उसको यूज करना ही नहीं है. बट देयर इज ए 3 R's प्रिंसिपल अप्लाई करो. रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. हर एक एरिया में मेरा एक्टिविटी से मैंने ये आदत यूज करके कितना कम कर सकता है. मैंने कितना पैदल जा सकता हूँ, कितना साइकिल में जा सकता हूँ, कितना मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता हूँ. ये सोचो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. सी दैट whenever you go out, make the people and society aware of the environmental importance. Don't throw wastages on the roads. Waste should be go into a waste bin which is meant for that type of waste.
So all these small changes in the lifestyle can save a big environmental impact. Every individual if start doing this, हमारा वर्ल्ड में इतना लोग है, अगर हर आदमी ये फॉलो करना चाहता है तो एटलीस्ट a considerable percentage of environmental degradation will come down. This will not only reduce our expenditure, it will also make sure the next generation a good environment. Let us come to the operation of the plant. First of all, I have to congratulate all of you for achieving the lowest ever water consumption in the mill in the year 23-24. In addition, we have achieved lowest ever power generation and consumption in the mill. So this all shows that the commitment of every individual and the management towards the environment. A continuous improvement is the story for the success. So this, even though as environmental report says that we are using hardly 50% of our water quota, almost. That's true when that water quota was when there was one machine. Huh? So we have started one more machine. That means we have used almost 25% of the water quota. So this is one of the great thing which everybody should feel proud that we are doing good for environment. Many more things which we can do in the plant operation. As a technical expert, we should not end in reduce, reuse and recycle. So this has to be an ongoing process which you are doing and which you will have to do and you are going to do. There are many ways where you can reduce the energy as well as water, which is one of the major environmental impact which our company, our paper manufacturing is using. You see, when machine is running, it produces paper in the paper machine. From the paper machine, it comes to the finishing. Everybody has to think that if I waste one sheet of paper, I have wasted the efforts of so many people who have put in to manufacture that piece of paper. I have wasted energy put in that paper. I have wasted water which is used to manufacture in that paper. That means, so every individual, if that comes in his mind during his work, during his activity, one or the other, your colleague might be working in the paper machine, the process which before it happens, उसका एफर्ट वेस्ट हो रहा है. आप ये सोचो, जो पेपर जब भी वेस्ट करते हैं, पेपर कभी लॉस होता है अपना एक्टिविटी से या अपना डिसीजन से, अपना टीम का वर्किंग स्टाइल की वजह से. सो द लॉसेस reduction in the finished product is also an energy saving effort. If we have to compete in global market, we have to be the best
In fact, now the standards are different. Now everybody says that my paper carries only this much water and power. Means carries means it doesn't carry. To manufacture that, I use only that much in that paper. That is the standard now. It is coming in the market. So what is the carbon emit which I have done while making this? This is the level of awareness and the strictness in the global and in the world. It is going to come so that the environment is safe, climate is safe. So this is the future. How every product is measured. Every product is not going to measure by its only its final quality parameters. That quality parameters you have to produce, but in addition to that, those are going to be measured how much environmental resources you have used in those product manufacturing. So we have to gear up to that every piece of paper is manufactured at a with lowest energy consumption, lowest water consumption, lowest resource which is used to manufacture that product. अगर मैंने पेपर मशीन में पेपर ब्रेक होता है, आई ट्राई टू कम टू थोड़ा सा मतलब टेक्निकल चीज है, बच्चे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. पेपर ब्रेक होता है, पेपर ब्रेक को कम करना तो आपको पता ही है, मतलब इट इज गोइंग टू सेव द एनर्जी. बट पेपर ब्रेक से पेपर पासिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पेपर बनाने का टाइम को सेव करेगा. That also will reduce your energy, your water. So we have to go to the next level now to reduce further, because we have reached to a standard where now there is an extraordinary efforts are required to further reduce the water and energy. So these are all the efforts which we have to make to reduce the non-productive time on the machine, along with the usage of water and electricity and other natural resources in the product. Reduce the wastage. Do the preventive maintenance so that we can reduce the non-productive hours in the machines. These are all the ways where you can reduce the per product environmental usage in one particular piece of paper, one product of which you have manufactured. I am sure everybody will put their effort towards reducing all these power, water and all other natural resources in our day-to-day activities, and we bring our product as a standard for the global other manufacturers. Today morning, I was just having a morning walk on our colony. There's a beautiful birds, voices I was hearing. So I was thinking, because many of you people are from the beginning, I think. From the 1996, the mill has started. Many of the people are working here. 1996, we were finding difficult
to find a tree to take a shelter. There are in people's mind that manufacturing industry is going to impact the environment badly. So to take out in the people's mind how our company has changed the environment of the area which is put and surrounding. I just want to explain how the degradation of the land can brought down. In this area there was not even a single plant. हर एक मतलब एक भी मतलब शेल्टर देने के लिए तो कोई प्लांट था ही नहीं. एंड पेपर मिल चलाने के लिए, ये मिल चलाने के लिए प्लांट की जरूरत नहीं है. फॉर यू पीपल्स इंफॉर्मेशन, वी परचेज पल्प, बट कंपनी हैज इन्वेस्टेड in developing the greeneries in the surrounding area. Now आज के दिन में तो हमारा A and B colony and the plant area is now it is an place where लोग जाते हैं ना रिसोर्ट के लिए as a tourist place. So the place has become like that. The place which was a dry grass, which is known for as it is just like a rain shadow area and many other words which we used to say at that time. So from that level to it has been converted into a place where it has become a tourist place. So this changes has happened because of the plant which we have put in this place. As in the report here said, we are giving water to 350 hectares for their cultivation. It is not only within the plant, in the surrounding villages are getting our effluent water, which is almost equivalent to the fresh water and is used for irrigation. And 350 hectares and surrounding almost Pondwadi and Badalwadi villages are getting most of this water, and the cultivation is happening and it is become their livelihood. So company has given water lifting from the dam and given it for irrigation by using in between in our manufacturing process. So in 1996, this was mainly told as a rain shadow area. There used to be no rain, almost no rain, and it was not required to purchase any umbrella. बट आज के दिन में ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ बारिश का टाइम में अच्छा बारिश होता है. So how this company has made the change in the environment aspect in this surrounding area by operating a manufacturing process. So company has equally given importance for the development of surrounding villages and restoring the impact of manufacturing process on the environment by way of plantation and many other things. All these plants, every plant, maybe we know that this plant has been planted on this year, and every year we are plantation is being done, so that generation will not find any day that there is plantation is going to end. Few days back there was a huge wind, and
अगर पहले का दिन है तो यहाँ का विंड से तो बहुत सारा मतलब इम्पैक्ट होता था बिकॉज ऑफ द प्लांट एंड प्लांटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स द इम्पैक्ट हैज कम डाउन. That's how company is working and people are working together so that the place which manufacturing process is saving the environment. A company has taken an initiative a few years back for as in CSR some surrounding villages the water storage in the Badalwadi and Pondwadi. Mr. Our CSR team is working on that. Even this year we are going to work on that so that the villages groundwater level will increase for the summer season. And the company is very much, as mentioned in the report, we are very particular on environmental impact. We follow the standards which the industry has to follow. We are almost, not only follow, we are almost 25% better than what each standard is put in terms of consumption, in terms of emission, and in terms of the discharge. Not even a single drop of water is going back to the river as a effluent. We are not polluting even a single drop of water which is in the waterbed. All the solid waste are reused. In fact, there are competition to take it for the reuse. Both the sludge generated in the effluent plant and the fly ash generated in the power plant. So these are all the things which I thought the people sitting here should know. And they have to be the spokesperson to the people on surrounding, how our mill is also working towards the environment friendly manufacturing unit. And everybody put their effort, bring their life in discipline in your life and keep the environment as one of the raw material which you are going to do every day. Water is not considered as an environmental free material. Air, water, all these things you have to consider it as one of the raw material which you are using. Once you use this as a criteria in your every day-to-day activities and even in our plant manufacturing process, then your mind automatically works towards the reduction, reuse and recycle. Last month there was competition was held as a drawing competition. I went there and really it is appreciable and the enthusiasm the children have shown was excellent. In fact, I have interacted with some of the children who was doing the drawing and their explanation was equivalent to an environmentalist. So I can say that proudly that our company children are going to become next ambassador of this environmental challenge. So
I thanks for giving me the opportunity for giving you some briefs and some requirement for the mill and for the global as well as to save the energy, save the environment, save the land erosion, and I especially thanks for the environmental department for arranging such a good gathering and motivating the people towards the environmental sensitive. So thank you one and all, and wish you all the best for your every activity which you do to save the environment. Thank you very much. थैंक यू भट्ट सर. यानंतर आज इतना ड्रॉप होने के बाद भी अगर हमें ये धूप लग रही है, सुबह के 9 साढ़े 9 बजे भी अभी तक नहीं बजे है, ये हालात है, तो दिन में हम बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? अब हम बैठते हैं अंदर प्लांट के अंदर या एसी ऑफिसेस में या गाड़ी एसी में चलते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन बाहर तो गर्मी है. और हम जो एयर कंडीशनिंग माहौल में बैठते हैं वो मेंटेन करने के लिए हम बाहर कितना टेम्परेचर छोड़ते हैं. तो ये क्लियर कट इंडिकेट करता है और इसमें कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि इन्वायरमेंट कैसे डैमेज हो रहा है, क्यों डैमेज हो रहा है. सब जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी उपभोक्ताओं की चाहतें बड़ी है या शायद नेसेसिटी हो गई इस लाइफस्टाइल की. कोई ये नहीं कह रहा है कि आप उपयोग मत करो, बट उपयोग और संसाधनों का उपयोग करते वक्त उसका एक्सेस या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वेस्टेजेस नहीं होना चाहिए, जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए. अब लगेगा कि क्या ये बातें हैं, क्या बोल रहे, लेकिन अब एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, उसी माध्यम से कुछ और चीजें सामने आएगी. हम दिन में पानी पीते हैं 3 साढ़े 3 लीटर पीना चाहिए कहते हैं, कुछ लोग कम पीते होंगे ज्यादा, और बट इट इज एवरेज 3.5 लीटर्स. तो ये और एक एनर्जी, 1 किलोवाट एनर्जी जो एक लाइट होती है 100 वाट की, या एसी चलता है तो 500 वाट या 1 किलोवाट का होता है, तो 1 घंटे के लिए कि एसी या रेफ्रिजरेटर चलता है तो 1 किलोवाट लाइट जाती है. 10 घंटे ट्यूबलाइट जलती है तो 1 किलोवाट जाती है. तो 1 किलोवाट सिर्फ पावर जलाने यूज करने के लिए हमें 0.9 या 1 केजी अप्रोक्सीमेटली समझो 1 केजी कोयला लगता है. तो 1 केजी क्या लगेगा, हाँ भाई 1 केजी तो है, बट 1 केजी कोयले के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिट होता है करीब 2 केजी, और वो 1 किलोवाट पावर बनाने के लिए 3.5 लीटर पानी लगता है. तो हम दिन में पानी पी रहे 3.5 लीटर, हमारी रिक्वायरमेंट 3.5 लीटर पानी है. अगर नहाने का भी एक इंडिविजुअल की बात करें तो भी शायद 20 लीटर सब मिलके होगा, लेकिन उससे ज्यादा पानी तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करने में लगा रहे. तो हमें करना क्या है कि यूटिलाइजेशन करते वक्त ऑप्टिमिस्टिक और क्या कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके सेविंग के रिसोर्सेस की सेविंग करने से ये हम कुछ हद तक कम कर पाएंगे. अब टेक्नोलॉजी आ रही है, कोल के बजाय सोलर पावर जनरेट हो रहे हैं, वहां शायद पानी की भी जरूरत नहीं, वहां भी पानी थोड़ा लगता है वॉशिंग एंड उसके लिए, बट काफी कम है. बट उसके भी कुछ ना कुछ दुष्परिणाम आएंगे आगे सामने जाके, पता नहीं, जो शायद रिफ्लेक्शन ऊपर होगा, फिर उससे रीइमिटेशन ऑफ द अल्ट्रा जो रेज है या इंफ्रारेड रेज है सनलाइट्स के अंदर की, उसकी क्या इफेक्ट आएगी वो पता नहीं अभी तक. तो चलो ये ऐसा है कि हमें रिडक्शन पे फोकस करना है. दो हम अपने इंडिविजुअल इसमें भी और प्लांट के अंदर भी हम ये काम करते हैं.